Hey everyone, we're going to start in about a few minutes. We're just waiting for everyone to join and then we'll start. Okay. Hi everyone. Are you guys able to hear me? Just drop a quick yes or no in the chat. Everyone? Okay, cool. Let me share my screen, guys. Okay. So today you have a very simple task, guys. Okay. Trust me, it's very simple.
Okay. So what is the situation? You have to design a product class. Product means like the product that you see on Flipkart. Okay. So you have to design a product class and create a few objects of it. Okay. So what's the smaller bifurcation of the task? Think about as many properties your product can have, and then design a class. And then design a class for it. Is the task clear to everyone? Is the task clear to everyone? Must be looking simple, right? Okay. Guys, is the task clear to everyone? I know it might sound very basic, but still I want you guys to do it. And I want you guys to write the code for it. Okay. Don't just think. I want you guys to code for it. वरना मैं किसी को भी स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल दूंगा अभी और फिर तुम्हें कोड दिखाना होगा. I want you guys to code it. It's a very serious question, guys. You will realize it in a moment. But let's start doing this. You guys have 5 minutes.
You don't have your laptop with you, Sahib? Okay, got it. Rest of the people, what's the update? How many of you guys designed the product class? I do not see any object getting created, Surjit. Same for you, Salahuddin. I don't see an object getting created. Guys, it's very important that you make an object out of it also. It's all connected, don't worry. But you have to make an object. Okay. So Milind has created, very good Milind, and created a bunch of products. Okay. Surjit created public class product object main. Okay. Cool. Now all of you guys have done this much, right? Now, can you like it's a proper interview situation, okay? It's a proper interview situation. So I want your brain to work on highest possible frequency. Do you see any problem with your code? All of you guys have written a code. All of you guys can see, all of you are writing very similar code.
that means all of you guys have some problem. If I'm talking about a problem, that all of you guys must be having kind of like some common problems. Can you guys list out some common problems to me? It doesn't follow SRP OCP. Why it doesn't follow SRP? First question is that, Surjit. Why do you think? If you want to come on a call, I can bring you on call. But I definitely want to understand what's your thought process when you said it doesn't follow SRP. What do you think? You want to come on a call or you want to write it in the chat? It's not extensible. Why it's not extensible? Just saying it's not extensible is not enough. Why it's not extensible is something that I would like to definitely hear about. If you want to create any functionality, we will have to change. But whatever functionality you will create, you will assume na ki only product related functionality you will create. So it is SRP, right? If I would have given you a task that in the same product class add something related to categories, then you would have said that, oh, it doesn't follow SRP. I just gave you simple task. Create a product class and make sure its object gets created. I didn't ask any other functionality, right? So it follows SRP, right? But that was not the requirement, right, Surjit? ऐसे तो हर सिचुएशन में कोई ना कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी होगी ही. देखो सुरजीत कह रहे हैं कि अगर मान लो कई टाइप के प्रोडक्ट बनाने हैं. हाँ, टाइप के प्रोडक्ट बनाने तो आपने टेक्निकली एक टाइप का इनम रखना चाहिए था, है ना? वो तो फीचर है ना, मतलब मैंने खुद ही तो कहा अपने हिसाब से जो फीचर सोच सकते हो सोचो. अपने हिसाब से जो इस प्रोडक्ट क्लास के बारे में तुम सोच सकते हो तुम सोचो, और फिर इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. यही था ना मेरा रिक्वायरमेंट तो, है ना? ऐसे तो कभी ना कोई फीचर होगा ही जो मिसिंग होगा. उसके लिए कुछ ना कुछ फेल हो ही रहा होगा. ऐसे तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है. ठीक बात है. एनीबडी एल्स? ठीक है, तो चलो. वन मोर इशू इज having optional field in this we can call multiple set calls. तो वो प्रॉब्लम कैसे है सलाउद्दीन? हाउ इज दैट अ प्रॉब्लम? आई डिडंट गेट दैट पॉइंट. ओके, शुड आई लाइक स्टार्ट?
Code readability. Show me how bad code you can write. Then we will comment on the code readability, right? So that's why I asked. Show me the code. Okay. Let's see. So what situation we have is, let's say we have to design a product class. Okay. And we have to create a few objects out of it. Okay. We are taking a very simple situation. This can happen with you in any kind of an application, that you will be having some kind of an entity, real life entity, and you have to represent it in the form of a class and create a few objects about it. So the first thing that we are going to do is we are going to think about as many properties of your product can have, right? Let's think about a bunch of properties. Okay. So if I think about a product entity, what all properties a product can possess, let's start thinking about it. Every product will be having some kind of a name. Okay. Every product will be having some kind of a description. Every product will be having some price. Every property will be, let's say, having some brand. Okay. Every property, let's say, will be having a type or / category, whatever you say. Every product will be having a created at, when that product was created. Every product will be having an updated at, that, let's say, when somebody updated that corresponding product, so on and so forth, right? And so on. Maybe multiple more properties. Let's say your product has a discount property, right? That your product has a discount. Then let's even write it, discount. Then let's say your product has an array of images. Okay. Then multiple images can be there, and so on. You can see in actual real world projects, in actual real world applications, what will happen is that your entities can have a lot of attributes, right? So in real projects, the classes can possess a lot of attributes. Okay. Now, having a lot of attributes is not a issue, to be very honest, right? Having a lot of attributes is not an issue, because whatever attributes you need to represent something, you need that, right? Okay. The problem that comes with so many attributes is managing these attributes become slightly hard. Okay. Managing these attributes will become slightly hard. Now you might ask me, sir, what do you mean when you say managing these attributes will become slightly hard? Okay. What do you mean by that? Like, what kind of a management you are actually talking about, right? Is there any particular situation where too many attributes can create some problem for us, right? Or what? So let's talk about the situation. So let's talk about situations where too many attributes, situation where too many attributes can be problematic. Okay. What can be the situation? First, let's say we want to create the objects. Creation of objects. Okay. Or let's say you want to say that we want to, let's say, validate the properties before object creation. Okay. Before object creation. Okay. Let's say there are two situations. I am saying that there are two situations in which having too many attributes can be problematic for us, right? The first is creation of objects, right? First is creation of objects. I am claiming that creation of objects for those classes which have got too many attributes is problematic. Second is, let's say,
there can be a situation where before you create an actual object, you want to validate that whether the properties that have been set for those particular for that particular object are valid or not. So you want to do some validations, but you want to do those validations before the object creations. You don't want to do those validation after the object is created, right? For example, let's take a situation that if you create an object of a class, it also will create a new entry inside your database. Now, you don't want to create an entry in your database if there is invalid data. That means before the creation of the object, you want to validate. You cannot do the validation post the object is created. Otherwise, let's say it will cause problems for us. Okay. So let's see the first situation. That how creation of objects is going to be an issue for us. So how your class looks like? Your class will be having a class name. Okay. And then it will be having a bunch of properties, right? For the timing, let's say we don't want to expose these properties to the outer world. We are going to have some private properties. So let's say private string name, private string description, private int price, and so on. And so on. Let's say you have all of these properties that I mentioned here. Let's say you have all of these properties. Okay. Then what will you be having? You will be having a constructor. You'll be having a product constructor, right? And inside, like, what might be the first solution that comes to your mind when I give you a problem that you have to design a product class is that let's have some basic properties and let's have a constructor. Inside this constructor's argument, let's say you are going to pass the values for the object. Let's say string name, string description, so on and so forth. A lot of arguments you're going to actually pass, and probably you're going to do something like this dot name is equals to name. This dot description is equals to description, and so on, right? So this will be the corresponding constructor for your class. This will be how the constructor will be looking like. And probably you will be having some getter setters for these properties because all of these properties are private. So let's say you want to write some getters so that if anybody wants, they can actually use these properties altogether. Okay. So let's do one thing. Let's code this class. Okay. Let's code this class. Once we start coding, then we will actually see a lot of problems coming here and there. Okay. So let's start coding it up. Okay. So I'll open IntelliJ. Just a minute. Let's wait for it to open. Just give me a minute, guys. Just give me a minute. We are actually having our IntelliJ ready with us. So I'll create a new package. Let's call this package as this. And let's inside this package, create one more package called as problematic code. Okay. And let's create one more package, better code. Okay, cool. Oh, not inside this. One second. So
How can we rename it? Okay. So let's create a new package, and instead of this, we should have a better code. Okay, so we have two packages, better code, problematic code. Let's close all of these files. Okay. Inside the problematic code, we are going to write a Java class product. Okay. Now, this product class, let's say, has some private properties, private string name. Sorry, this should be capital S. Private string description, private int price. Okay. Let's see what else I thought about. Private string brand. Okay. Private string brand. Then for the timing, I'm not creating a separate category class. Let's say you have something like private string category. Okay. Otherwise, ideally what should happen is you should have a dedicated category and a category brand, a dedicated brand class. But okay, let's keep it like this. Okay. Then let's say you have private int discount, private string created at, private string updated at. Okay, so let's say all of these properties are there. Few more, let's say you can do private list of string you can have as images. Okay, private list of string you can have as images. Okay, cool. So let's say these are the properties. Now, if you want to instantiate an object out of it, you need to have a constructor. So this will be the constructor. Now, how many different type of constructors you can have? You can have a default constructor kind of a thing that will initialize all of these properties with what? With default values, right? So let's say if I write a main class separately here, so let's create a new Java class, main, public static void main. Okay. And let's say I create a product P is equals to new product. Okay. If I do product P is equals to new product, if you will run this code, let's just wait for it. You can see it will run properly, right? Now what has happened? It has created a product, but with all default values to the properties, right? Ideally, you don't want that. You definitely want to set the values to the properties. So you will be doing something like this. String name, string description, int price, string brand, string category. Okay. Then int discount, string created at, string updated at. Okay. Then let's say an array list of string images. Okay. Let's see you have all of these. Okay. And then what you will be doing, you will be doing something like this. This dot name is equals to name. This dot description is equals to description. This dot price is equals to price, and so on. Let me just quickly do it. Brand is equals to brand. Category is equals to category. Discount is equals to discount. Created at is equals to created at. Updated at is equals to updated at. And this dot images is equals to images. Okay, cool. So ideally, your class will start looking something like this. Okay. Now, when you are actually going to create a product, now what you have to do, you have to pass all of these properties to your constructor. Now, if I want to pass all of these properties, what is the first constraint? The first constraint here is that I need to remember the order in which the arguments are expected. For example, the first argument should be the name. Second should be the description. If by mistake, I do something like this is an iPhone, and then second argument I pass as an iPhone,
So ideally, what I should have passed for description, I by mistake passed for name, right? So I have to be really careful about the order of the arguments, that what arguments I'm actually passing. Okay. This is an iPhone. Then what do you need? You need price, right? So price is, let's say, 1000 US dollar. Brand is Apple. Category is mobile. Okay. Then what? You have, let's say, discount created at. Discount is, let's say, 10% discount. Created at is, let's say, 2022 0909. Okay. And let's say for the timing, I'll keep updated as at also like this. Okay. Updated at is also this. And then last, we have a new array list for the time being. Let's say new array list of string. Okay. Or maybe you can just pass it like this. Okay. This is how you create a new object. This is how you create a new object. Now, what I want you guys to recall what process I did, what I had to go through here. Do you see any problem in the creation of this class and creation of this object? Do you see any fundamental problem going on here? If yes, then what? If no, then why not? Pause yourself here and think about all of the problems that can happen due to this kind of a code structure. Okay, pause yourself here. Take 5 minutes. Tell me what you see are the problems here.
ओके, बिल्डर पैटर्न सलाउद्दीन तुमने तो सीधा सॉल्व कर दिया, बट हाँ ठीक है, नाइस थिंग कि तुमने डायरेक्ट मैसेज किया। तभी मैं कह रहा हूँ ना, मैं सीधा नहीं पढ़ाना चाहता, मैं चाहूँ तो सीधा बता दूं ना वो। मैं चाह रहा हूँ कि एक पूरा थॉट प्रोसेस लें कि एक नॉर्मल प्रोग्रामर जो डीएसए करता है उसको मैं ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ, क्या कुछ सोच सकते हो कि प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए तुम देखो, मैं पूरी ना स्टोरी कनेक्ट करूंगा लास्ट में जाके। फॉर बिग प्रोजेक्ट कोड इज नॉट मेंटेनेबल, अ स्मॉल मिस्टेक कैन ब्रेक द होल कोड, जस्ट लाइक मिसप्लेसमेंट ऑफ आर्गुमेंट। वेरी गुड साहिब। Constructor overloading is hard to do. Very good, Rohit. All params are mandatory while creating product. What if product does not have a discount? We are forced to pass it. Very good, Omkar. I can see a few of the last classes concepts helping here as well. Rest of the people. Okay, so let's talk about the problems now. So I guess everybody has given a good thought. Let me talk about the problems. So what are the possible issues with this code? I already pointed out that having a class with a lot of attributes can cause problems while creation of objects. What is the issue? Everywhere where I have to create an object of this class, I need to remember the order of the arguments. Okay. So problems. Let's talk about problems. Problem number one. We have to remember the order of arguments. The order of arguments, making it hard to maintain. Making it hard to maintain. Right? The code is not very maintainable as of now. Okay. First thing. Second thing. What is the other issue that you can actually look for? Here, what if we want to have some optional arguments? What if we want to have optional arguments? Okay. What if we want to have optional arguments? If you want to have optional arguments with this current approach, you cannot have it. You will be forced to actually put default values to the attributes. We will be forced to manually give some default values. Okay. And default values in the constructor. Like, of course, you can do something like this. You do not allocate the price. If you want to keep the price as optional, you don't allocate it here. But you have to pass it in the constructor. You cannot keep this particular part empty, right? Even if you pass null, you have to pass it. So you are forced to pass all of these properties. Okay. But what is the benefit of this approach? We talked about the problems. What is the benefit? Any benefits? The second problem is not going to occur here, that we need to validate the properties of the object before the object creation. Can I say that when the constructor ends, then the object is finally completely created? While allocating these properties, we can have our validation logic here, that whether the name is coming correct or not, whether the description is coming correct or not, so on and so forth. And if something doesn't come correct, we can throw an exception. So the benefit here is validation is easily doable. Easy to do validation. Easy to do validations. Okay, cool. So this is the situation here. Now, how can we solve it? The first thing that, if you know basic object-oriented programming, that will come to your mind will be to solve problem number two. What is problem number two? That it is hard to have optional arguments passed to your constructor.
Okay. So how can we solve this? So the problem of forcefully passing arguments can be solved by constructor overloading, right? That is, how about if, let's say, for a particular product, you don't want to set all of the properties. Okay. Let's say there can be a situation that you only want to set name and price. So you can have a constructor. Okay. You can have a constructor that is just having name and price. Okay. Then let's say if you want to have a constructor that has a name, description, and price, rest everything is going to get default values. We are not forced to pass it. Okay. So we can do constructor overloading, right? We can do constructor overloading. If you do constructor overloading, then you might feel that the problem number 2 is getting solved, that you are not now forced to pass some default values for optional arguments, right? Why I'm saying you might feel, because it doesn't actually solve the problem. It actually solves one problem. It solves one problem, that now you are not forced to pass the arguments. For example, now, if I don't want to pass created at, I'm not forced to pass created at. Let's say I want to keep it as an optional argument. Okay. But it actually creates two problems. First problem is constructor explosion. What is constructor explosion? Think about the fact that if, let's say, you have 4 attributes of your class, then how many different possible constructors can be there? There can be total 2 raised to the power 4 possible constructors, 16 possible constructors. If you have 10 arguments or 10 attributes, then you'll be having 2 raised to the power 10 possible constructors. Do you think as a programmer it is feasible to write 2 raised to the power 10 constructors, all different combination? If you don't know how 2 raised to the power 4 comes up, for example, let's say you have a name attribute, price attribute, description attribute, and discount attribute. Okay. Now, this is a problem of making all possible subsets, all subsets. This is a problem of all possible subsets, that in some subset, you will not pick anything. That will be the default constructor. In some subset, you'll pick everything. In some subset, you'll just pick, let's say, name, description, and discount. In something, you'll just pick name, price, and discount. In something, you'll just pick discount, and so on. So there will be how many subsets of 4 elements are there? 2 raised to the power 4. So if you have 4 attributes, you have 2 raised to the power 4 different possible constructors. This will call constructor explosion, that you have too many constructors to build. You cannot possibly create all possible constructors. First thing. Second thing, this is also hard to maintain. Even if you, let's say, currently think that, oh, I just have 2 properties, so I have to just create 4 constructor. How cool is that? I will do it. Let's do the hard work and let's create all 4 constructors. Later, if you want to introduce a new property, then you have to write more constructor and maybe you have to edit a few, right? So the code is not extendable properly, right? It's not a very extendable code. Apart from that, legally, you will not be able to create a few constructors. Second problem is a few constructors will cause issue. Let me show you which constructor will cause an issue. Let's say you want to have a constructor that has name and price. You want to have a constructor that has a name, description, and price. Let's say you want to have a constructor that has name, brand, and price. Now, can you see? There is a compile time issue coming up. Why there is a compile time issue? I want to have a constructor with name, description, price, and one more constructor with name, brand, and price. What is the problem? The problem is this is not constructor overloading. Why? Look at the signature of the constructor. First argument string, second argument string, third argument int. First argument string, second argument string, third argument int. Logically, both of these constructors are same.
changing the name of the variable doesn't make them two different constructors, because constructor overloading works on the feature of signature, function signature or constructor signature. Signature means what all properties you are passing and what is the return type. Constructor doesn't have a return type, so we'll just look at what all properties you pass. Properties are string, string, int. Here also string, string, int. Even if the order would have been different, then also it would have been great. If the order would have been different, then also this would have worked fine. But if the order of the properties that you have passed is also same, you can see this is not possible. So you can see few of the constructors you will not be able to even create. Few of the constructors you will not be able to even create. So constructor overloading might look like an option to us, but it actually solves one problem but creates two more. So ideally, it's not the best solution for us. Make sense, guys? Is this point making sense? Drop a quick yes or no in the chat. समझ में आई ये बात? किसी को कोई क्वेश्चन? और वैलिड बात कह रहा हूं मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। जैसे एक डीएसए सॉल्व करने वाला बच्चा सोचेगा इस प्रॉब्लम को, मैं वैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैं सीधा फाइनल सॉल्यूशन नहीं बताना चाहता कि तुम लोग भाई सीनियर इंजीनियर हो, सबको फाइनल सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा सीधा। एकदम अपन एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर तुम्हें हर स्टेप पे प्रॉब्लम पता होगी तो कल को मान लो ऐसी कोई सिमिलर प्रॉब्लम आएगी ना, तो तुम भी उसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर पाओगे। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? अच्छा, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप? तो काम करते हैं, जस्ट जस्ट गिव मी मिनट गाइस, जस्ट अ सेकंड। ओके, कूल। तो एक काम करते हैं, बेटर कोड में जाते हैं, बेटर कोड में एक नया पैकेज बनाते हैं V1, और इसी बेटर कोड में एक और पैकेज बनाएंगे V2। अब इसके बेटर कोड को भी ना वर्जनिंग करेंगे, अलग अलग वर्जन रहेंगे इसके बेटर कोड के, ठीक है? नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दिस इशू? देयर इज वन वे टू सॉल्व दिस इशू। आई विल कॉपी दिस प्रोडक्ट क्लास, okay? I'll copy all of this. I'll go to better code V1. Here I will create a new Java class product, and now let's say instead of having a constructor with all the arguments, we know one very simple thing that can help us, which is let's have a default constructor only. Let's have the default constructor only. Let's not have any constructor overloading altogether. How about we use setters? We use setters, right? So let's say we do public void set name, public void set description, okay? And let's copy paste this. Set price, okay? Then public void set brand, public void set category, and so on, okay? And all of these are going to get a argument string name. Here you are going to have string description. Here you are going to have int price, string brand, okay, string category, okay? And in all of these, what we are going to do is we are going to say this dot name is equals to name, this dot description is equal to description, this dot price is equals to price, this dot brand is equals to brand, this dot category is equals to category, and so on and so on. There will be more setters like this, okay? Now
What benefit did we get here? What benefit did we get here? The benefit is if I write the main class, inside the main class, we do public static void main. Okay. Inside the main class, let's say, if now I have to create a product object, it's very easy. Product P is equals to new product. That's it. Okay. And now it's a plain object. Now, whatever values you want to set, you can set it like this. P dot set name, iPhone. P dot set description. This is an iPhone. P dot set brand, Apple. P dot set category, mobile. P dot set price, 1000, and so on. And so on. Okay. Cool. So what benefit did we get here? What benefit did we get here? The code definitely looks far, far, far better than the previous solution, right? But what is the issue here? Let's talk about both of them. So the next approach that we thought of was, the V1 solution that we thought of was using getter setter. Now using getter setter, what is the benefit? The code is more readable. The code is more manageable. And the code is more extendable, right? If you will add a new property, all you have to do is you will add a new property here, private some property, then you will add a setter for it and you will call the setter here. No problem. How cool is that, right? But what is the issue? Issue is how to validate before object creation. Right? This is a problem, right? Now the problem here is that you create the product P. You create the product P. The product is in the memory and then you set the values. That means even if you do the validations here, if let's say you do the validations like, let's say this is a possible validation, that is the incoming price. If it is less than 0, then you return. Okay, let's say this is a validation that you did. This validation you will be able to do when you call the setter. But our situation was what? Our situation was that the validation should happen before object creation. It should not happen after object creation. That is the problem, right? That is the problem. So this solution looks elegant. This solution looks better, but it doesn't satisfy our need. And ideally, it actually leads to the second problem. So it solves the first problem, creation of object, but this time it creates an issue in the second problem, that validation of the properties before object creation can be problematic. How many of you guys are able to get this point? समझ में आ रहा है? सही लग रहा है ना? मेरे सारे आर्गुमेंट सही लग रहे हैं ना? ऐसा लग रहा, बना रहा हूं। वैलिडेशन समझ नहीं आया। वैलिडेशन का मतलब पता है साहब? वैलिडेशन होता है क्या, ये पता है? हाँ। सिचुएशन क्या थी, कंडीशन क्या थी यार? ऑब्जेक्ट बनने से पहले वैलिडेट करना है। इस कोड में किस लाइन पे ऑब्जेक्ट बन गया ये बताओ? कौन सी लाइन नंबर पे ऑब्जेक्ट बन गया? लाइन नंबर 5 पे ऑब्जेक्ट बन गया। कैन आई से दैट? ऑब्जेक्ट तो बन गया। हमें ऑब्जेक्ट में वैलिडेशन ऑब्जेक्ट बनने से पहले करनी थी। अब मान लो तुम कॉल करते हो पी डॉट सेट प्राइस, यहाँ पे तुमने वैलिडेशन लगा दी, अच्छी बात है कि भाई प्राइस अगर लेस देन 0 आएगा तो मैं प्राइस सेट ही नहीं करूंगा, बढ़िया बात है। बट ये वैलिडेशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले करना था। तुम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद ये वैलिडेशन कर रहे हो। बात समझ में आ रही है?
मिलिंद हर लेक्चर के साथ ही अपलोड हो रहे हैं, तुम अपने डैशबोर्ड पे जाओगे ना, हर लेक्चर के जो रिकॉर्डिंग है उसके नीचे मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ. ओके guys, there is one more issue with this code. The issue with this code is this kind of a thing will not work for immutable objects. Okay, one more issue is that what about immutable objects, right? If you want to have a class which creates immutable objects, there can be different situations in which you want an immutable object. Then this solution will not work, because in an immutable object, the concept of setter should not exist. But without setters, you will not be able to set a values, right? And if you want to default set a value, then you will land back to the original problematic code. So this is also one issue with this approach. Can I say that, guys? Okay. So this solution looked promising, but it solved one issue, but it created two more issues. इसने एक issue solve किया, but इसने भी दो issues बना दिए. So this should not be our final code. Can I say that? Okay. So what's the conclusion? What's the conclusion with our discussion? Let's talk about that. Okay. Now the conclusion that we are able to draw is that just using setters will not work, right? And having too many arguments in the constructor will not work. Okay. That having setters will not work. Having too many arguments in the constructor will not work. So how about we go to one more approach? What if we have all the arguments which are passed in constructor stored in a data structure? Stored in a data structure. Okay. So what I'm proposing is that previously your constructors was very bloated. Previously your constructors were too much bloated, right? See, it's a very bloated constructor. I am saying let's not bloat our constructor. Let's say we pass a data structure here. And inside this data structure, we have all the arguments. Now pause yourself here and think, what can be a possible data structure which can store a bunch of arguments for us, and we should be able to identify all of those arguments? What do you guys think? Very good, Surjit. Very good, Rohit. What about the rest of the people? Yes, guys. So if you want to store all of these arguments in a data structure, the most suitable data structure should not be a list.
Why it should not be a list? Because inside a list, how do you know? Let's say if you store a values, let's say you stored that first argument is iPhone, second argument is 20, third argument is 30. What do you know this 20 represent? What does this 30 represents? If you will pass all of these arguments in a list, it will be as bad as your bloated constructor, right? It will be as bad as your bloated constructor. But we can pass a hash map. We can actually use a hash map for this data structure, right? How hash map can help? In a hash map, you have key value pairs. Okay. So inside the keys, you can define that. Let's say you are passing a name. Let's say you keep the type of the key as a string. Okay. So you put name, price, description, all of these as keys, and then assign them some corresponding values. But now the question that should come to your mind is, every key can have different type of values, right? For example, name will be string, but price will be integer. And whenever you have created hash map, then a hash map has a, let's say, key of the type string, and a value has one type, right? Either int, or the value is of type string, or the value is of type float, and so on. How can you have a data structure of hash map which can have different type of values? So if you're working with, let's say, Java or JavaScript, let's say, how about you keep the type of value as object? You keep the type of value as object, because eventually everything in Java can be converted to an object, right? Everything can be boxed to an object, right? An integer can be boxed to an object, and a string is an object, so on and so forth. So you can keep the value as an object, key as a string, and then you can do whatever you want here. For example, iPhone 10 or 100, some description, and so on. This can be the hash map that you can pass. Now you might be thinking, okay, with hash map, you looks like you have solved the problem of bloated constructor. But what about validation? Now the best part is, because you are having the hash map passed in the constructor, now I can do validation inside the constructor, right? Let me actually show you with an example. Okay. So let me go back to this. Let's close both of these. Okay. Product. Okay. And let's open this product. Let's copy everything from here and paste it here. Okay, cool. So now what do I suggest is that inside your constructor, let's not have setters. Let's not have any setters. Let's use our constructor only, right? Instead of having a very, very bloated constructor that has too many arguments, let's use a data structure that can actually store all of these arguments together. Okay. So what we can actually do is, we can actually pass a hash map. This hash map will be of type what? Let's say string comma object. Okay. Or technically, in order to pass the hash map, you just need to, I guess, write MP here. Right. Can I say that? Okay. Now, this hash map is going to contain all the key value pairs. This hash map is going to contain all the corresponding key value pairs. And I guess we should give the type here. We should give the type here, string comma object. Okay. Cool. And now you can do whatever validation you want. For example, if mp.price, okay, or technically, I guess you should do mp.get, right? So mp.get price, if it is less than 0, then you, let's say, do not do anything, right? Or let's say if it is greater than 0, right? If mp.get price is greater than 0, then only you should do this dot price is equals to mp.get price. Okay. mp.get price, right? Let's see, what does it throws an error? What happened? Okay. Oh, my bad. Now you can see the value is of type object. So technically you are going to do
compares, right? So there is a dot compares to, right? So MP dot price dot equals, and you can say you will check for price, or let's say 0 or something, right? So you can override your equals method, things like that, and then based on that you can actually allocate the price. My point be that you can use a hash map like structure. Here the validation will happen inside the constructor only. You don't have a bloated constructor also. Everything looks like a fairy tale here. But this hash map approach also has a problem. What is the problem? In hash map, what if hash map do not have a property as a key? Right? Let's say whosoever created the hash map forgot to add a property, or in the hash map, what if there is a spelling mistake in property? Okay, so let's say instead of writing price like this, by mistake somebody wrote price like this. The typo can happen, right? You are giving the caller of the product class an opportunity to make a mistake. You are giving the caller of the class an opportunity to make a mistake. You can see if the key instead of all small letters will be one capital and then remaining small, then it will not be able to detect the price, because your code is trying to get what? A price. But this is actually having price with a capital P, right? This is having price with a capital P. So these typos can actually cause issues as well, right? So you are giving opportunity to your client to make mistakes. That's sign of a bad code. Same thing here. You are introducing unpredictability, that every time you have to actually check whether a key is present or not, right? Although this can be a benefit as well, that you don't need to pass all the keys. If you have optional arguments, then you only pass the mandatory arguments as the keys. But let's say if something was mandatory, but you didn't pass it, right? What if there was a mandatory argument, but your key inside your hash map, you do not have a key for that? What will you do in that case? So all of these again raises a bunch of questions in front of us, which technically shows that this might not be the final approach that you want to go for. How many of you guys are able to get this point? Everything up till here, whatever we discussed, is this making sense to everyone? Every solution has problems. Now every solution that we discussed was having some problems. But one thing we can definitely conclude, that the hash map based approach was the closest to our solution, because it was not having bloated constructors, and we can do validation inside the constructor, right? It actually caused issues which are not design problem, but it can be the mistake of the caller. It can be the mistake of the caller classes. So I want you guys to pause yourself here and think about, can we somehow, because both of the problems that we saw here, both of the problems, the spelling mistake problem and the missing property problem, both of them happened because we used a hash map. We cannot use the list. We already saw that stack, queue, and everything doesn't come into the question. So can you replace this data structure from hash map to something else? Can we have some other data structure? Maybe that will not cause all of these problems for us. Pause yourself here and think about it. Getting my point, guys? Is the question clear to everyone? Maybe think about an alternative to hash map, because just one argument passed to the constructor looks very good to us. So anything that you guys feel can be good for us, think about it.
Another class as an object parameter. Very good, Omkar. Encapsulating the cartoon of product object. Creation of project. Passing as object. Very good, Surjit. You guys are thinking in the right direction. Anyone else? Okay, cool. So let's talk about it. So now, if you want to think about an alternative data structure, what if we use object of another class which has all the same attributes as our product class. Okay. So let's say, how about I propose that you write a class builder. You write a class builder. Okay. Why I'm naming this class builder? Because this is going to help you build an object. Okay. In this builder class, let's say we have all the same properties. Private string name, private string description, private int price, and so on. Okay. And inside your product class constructor, instead of passing a hash map, you pass an instance of builder B. Okay. You pass an instance of builder B. And let's say this builder B has implemented the solution of getter setter. Because now, if just think about it, no, if you just write one more class which has all of the same properties, then this class also suffers from the problem of too many attributes. So what if here we use the solution of getter setter? Do you remember what was the problem with the solution of getter setter? If we use the solution of getter setter with products, then we can not validate the product object before creation. But there is no such constraint of validation on builder class object, right? Because our agenda is to create a product object. This product object should go through some validations before creation. Those validation doesn't apply on builder, right? It's kind of like a helper class. What was the constraint? Think about it. Remember? So here, using getter setter, you had a lot of benefits. What were the issues? That we were not able to validate before object creation of product, right? Before object creation of product. And immutable object issue was there. That what is the product object we want to make immutable. But both of these constraint doesn't apply on the builder object, right? It's a helper class. So we do not want to make it immutable. Plus, we do not want to have any validations here. Let's say we don't want to do any validations. Whatever values the user will give, we will directly set it. And because we have getters, so what we can do is this dot price is equals to b dot get price. This dot name is equals to b dot get name, and so on. Can you see our product class is not having a bloated constructor? It is only having a single argument. So very nice looking constructor we have. Plus, we can do the validations inside the constructor, just like how we were able to do the validation with the hash map inside the constructor. We were able to do validation inside constructor using hash map. Here also we can do all the validation that if b dot get price is greater than 0, then only allocate the price. And the option of making a mistake on the name. So remember, what was the issue with hash map? The issue with the hash map was, what if we do not have a property as a key? That issue will never exist here. That issue will never exist here. We will always be having something set, because when you will create a builder object, let's say builder B is equals to new builder, then this is using the default constructor. So it will be having all of the properties with default values. And then let's say you do b dot set price 100, b dot set name as something, and so on. Then it uses a few of the setters.
So can I say every property is present? Unlike hash map might be having a few properties missing. Here, no property will be missing. Yes, some property will be having default values. Second thing, in the hash map, there can be an issue of spelling mistakes, right? That your key that somebody passed had a spelling typo. That issue will also never exist, right? Because whenever you are calling the setters, you don't need to handle the spelling of these properties, right? You just need to call the setters. So both of those problems are actually solved here, right? So if I try to implement this solution, then it definitely looks promising. So we will make a V3. Okay. Inside the V3, I'm going to have a class builder. This builder class will be having all of the properties of product class. And let's technically copy everything from here. Builder. Okay. And you can see it has a few setters, and similarly like these setters, it will be having a few getters. So public string get name, return this dot name, public string get price, return this dot price, public string get description, return this dot description. This should be int, and so on. There will be a few more getters. Okay, there will be a few more getters. And now let's say we have a product class, new Java class product. This product class looks very similar to this product class where we were using hash map. Okay, so paste it here. But now instead of using a hash map, we are going to use an instance of builder. And now we can do all of the validations. If b dot get price is greater than 100, greater than 0, then only we are going to do this dot price is equals to b dot get price. Similarly, we can do this dot name is equals to b dot get name. Right? And so on. And so on. Right? We can allocate all of these properties. And now if somebody has to create an object of product, what do they have to do? Let's create a main class. Public static void main. First of all, they will create a builder object, new builder. On this builder object, they are going to set, let's say, brand. They are going to set, let's say, name. They are going to set, let's say, price. And so on. And then let's say only these 3 arguments were mandatory. Rest of the arguments, if you do not set anything, they'll be having default values. And now you can call new product here. Right? This product will take the builder object in the constructor. Can I see that? Can I see that? And now both of the problem are solved. Our product class constructor looks elegant. We can do validation before the constructor is called, right? Or you can say before the object is created. Both of the problem look solved here. You can say that this solution that we have built up is the simplest form of a design pattern. It's a simplest form of a design pattern called as builder pattern. Builder design pattern. First of all, what is a design pattern? Design pattern is kind of like a coding solution prepared for a object-oriented programming problem. Generally, we call it like that because you can see there will be some issues with your classes and objects and everything. And this solution that we will discuss is going to help us the problem in a particular manner, right? That's what we call as design pattern. And this design pattern is called as a builder pattern, right? There are different classes of design patterns. For example, creational pattern, structural pattern, right? This is
This lies in the category of creational design pattern. Creational design patterns deals with the problems in the classes when the objects are getting created. You can see the problem was during object creation, right? So this actually solves the problem during object creation altogether, right? And this is a very simple version of the builder design pattern. How many of you guys are able to get this point? Now you know the why behind the design pattern. On the internet, just go anywhere, watch any lecture, right? 90%, I'm still giving 10 to 15% people a shot that they will still have you go through all of this intuition. But most of the people will just tell you that, okay, this is a builder design pattern. If you have a classes with a lot of attributes, you can apply this pattern. This is how you code the pattern. I have not yet coded the pattern. This is the V0 of that pattern. But you can see our solution is already looking quite elegant. Can I say that? Can I say that, guys? अभी तक की एलएलडी की सीरीज में तुम देख रहे हो कितने सही सही प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. विमल, डिजाइन पैटर्न ना बहुत सारे होते हैं. तुम देखोगे तो मतलब अगर मैं मुंह जबानी भी तुम्हें बताऊं, जितने मुझे एक बार में मान लो दिमाग में आते हैं, जैसे बिल्डर पैटर्न है, फैक्ट्री पैटर्न है, सिंगलटन पैटर्न है, स्ट्रेटजी पैटर्न है, उसके बाद तुम्हारे पास इटरेटर पैटर्न है, उसके बाद तुम्हारे पास लेट्स से चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न है. बहुत सारे डिजाइन पैटर्न होते हैं. ठीक है. मेन डिजाइन पैटर्न्स की 3 कैटेगरी होती है. मैं उस थ्योरी में जाना ही नहीं चाहता था कि कितनी कैटेगरी होती है, क्रिएशनल क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्या होता है, क्योंकि प्रॉब्लम लेके समझना ज्यादा आसान है रादर देन थ्योरी पढ़ाना. डिजाइन पैटर्न बहुत सारे होते हैं, हम लोग कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, बट हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे उसमें सबकी इंट्यूशन देखेंगे. मेन आइडिया ये रहता है कि यार कैसे तुम अपने क्लास और मैंने तुम्हें एलएलडी के स्टार्ट में क्या बताया था, तुम किसी भी एलएलडी के कोहॉर्ट में जाओ, तुम्हें ना क्या बेचा जाएगा, एक चीज बेची जाएगी कि यार डिजाइन पैटर्न सीखेंगे हम, बहुत सारे डिजाइन पैटर्न पढ़ लेंगे. मैंने तुम्हें क्या कहा था कि एलएलडी के स्टार्ट में एजेंडा क्या है. हमारा एजेंडा है साफ सुथरा कोड लिखना. आर एजेंडा इज टू राइट एज क्लीन कोड एज पॉसिबल. रिमेंबर दैट. और देखो हम लोग वही कर रहे हैं नहीं कर रहे. अच्छा, तो रोहन, रोहित, तुम ये बताओ, हैश मैप में प्रॉपर्टी ऐड करने में प्रॉब्लम हर बार हो सकती है जब एक नया हैश मैप और एक नया प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है. जब भी एक नया प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक नया हैश मैप बना के भेजना पड़ रहा है ना. यहाँ पे वो स्पेलिंग मिस्टेक बस एक बार होगी जब बिल्डर क्लास बन रही होगी. एक बार बिल्डर क्लास किसी ने सही से बना दी, उसके बाद थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है. जब एक बार बिल्डर क्लास बनाई तो तुम्हारे कोड रिव्यू में वो पकड़ा जाएगा. ऐसे हर बारी हैश मैप का कोड, जब भी तुम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कोड रिव्यू करने वाले को हर बारी तुम्हारे हैश मैप बैठ के स्पेलिंग चेक करनी पड़ेंगी. ऐसे बिल्डर क्लास में एक बार स्पेलिंग चेक करनी होगी, हैश मैप में हर बारी जब कहीं पे भी नया ऑब्जेक्ट बन रहा है स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी. समझ में आ रहा है? यस, वो भी एक तरह का डिजाइन पैटर्न ही है, वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. जब बैकएंड पढ़ेंगे तो देखेंगे. ठीक है. मशीन कोडिंग राउंड में, हाँ, मतलब मशीन कोडिंग राउंड में या देखो, मशीन कोडिंग राउंड में ऐसा नहीं है. देखो ये जो तुम बोल रहे हो ना साहब, ये तुम वो बोल रहे हो जो तुम्हें भैया भाभी और दीदी चाचा जो यूट्यूबर्स हैं वो बेचेंगे कि मशीन कोडिंग राउंड का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना. ऐसा नहीं होता. देखो, मशीन कोडिंग राउंड का एजेंडा होता है एक वर्केबल कोड बनाना, जो कि एक नॉन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम है. वर्केबल प्रोजेक्ट बनाना. मशीन कोडिंग राउंड में वर्केबल प्रोजेक्ट बनता है. ठीक है.
अब जब वर्केबल प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, डीएसए के क्वेश्चंस में क्या होता है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, हार्डली तीन फंक्शन लिख लेते हो तुम। जब एक वर्केबल प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है ना, तो तुम्हें ढंग से क्लासेस व्लासेस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पे एजेंडा दो चीजों का होता है, एक वर्किंग प्रोजेक्ट होना चाहिए और साफ सुथरा प्रोजेक्ट होना चाहिए। जब साफ सुथरा प्रोजेक्ट बना रहे हो और तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो, तो उसके भाई अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स यूज करने पड़ेंगे। तो बेयर मिनिमम सॉलिड प्रिंसिपल तो करने ही है। और फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती जाती है, फिर डिजाइन पैटर्न लग जाते हैं उन प्रॉब्लम्स में। ऐसी सिंपल मशीन कोडिंग प्रॉब्लम हो सकती है जहां कोई डिजाइन पैटर्न ना लगा। ठीक है। तो इट्स समथिंग दो दीदी भैया भेजते हैं, बट I guess machine coding round is the round where you have to make a workable project code. That's what machine coding is. यार जैसे मैंने फ्लिपकार्ट के दिए हुए हैं, और मतलब मैंने फ्लिपकार्ट के, एटलासियन के दिए हुए हैं मैंने, बहुत सारी कंपनी के दिए हैं यार। तो मैं तुम्हें एक ऑन एन एवरेज बता देता हूँ। दो तरह के मशीन कोडिंग राउंड होते हैं। एक मशीन कोडिंग राउंड होता है जो 1 घंटे का होता है। उसमें ना बहुत ही छोटी सी कोई प्रॉब्लम दी जाती है, उसी टाइम तुम्हें मोटी मोटी वो प्रॉब्लम कोड करनी होती है, बट वहां पे ना वर्केबल सोल्यूशन एक्सपेक्टेड नहीं होता। फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज क्या करती हैं, फ्लिपकार्ट में क्या होता है, वर्केबल कोड एक्सपेक्टेड होता है, तो वहां पे 1.5 घंटा तुम्हें मिलता है। हाँ मेरे को याद है मशीन कोडिंग का क्वेश्चन, मतलब फ्लिपकार्ट वाला तो मेरे पास पड़ा भी है, मैं दिखा देता हूँ। तो वर्केबल सोल्यूशन फ्लिपकार्ट वाले में क्या होता है कि 1.5 घंटे तक तुम्हें कोड करने का टाइम देंगे, तुम्हें स्क्रीन शेयर करके 1.5 घंटे तक कोड करना है, कोई तुमसे कोई बात नहीं करेगा, चुप मार के चुपचाप कोड करो। 1.5 घंटे के बाद फिर 1 घंटे का डिस्कशन होता है उसके ऊपर। वो 1 घंटे का डिस्कशन आधे घंटे भी चल सकता है, 1 घंटे भी चल सकता है, ज्यादा भी चल सकता है, क्योंकि कोड है। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जब मैंने फ्लिपकार्ट का दिया था, FII, मतलब मेरे इंटरव्यूज क्लियर हो गए थे। तो आ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि फ्लिपकार्ट क्या पूछा गया था। डो, 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 डो। आ, हम्म, मतलब मोटा मोटा एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था। और मशीन कोडिंग राउंड में तुम्हें डेटाबेसेस वगैरह, नेटवर्क कॉल्स वगैरह ये सब नहीं करना होता। FII, रुको यार एक सेकंड, मेरी ना दूसरी आईडी पे है वो, तो मैं वहां से निकाल के देता हूँ। ठीक है, डॉक्स। एक सेकंड रुको, शेयर एंड एक्सपोर्ट, प्रिंट। फ्लिपकार्ट में तो मशीन कोडिंग राउंड SD1 के लिए नहीं होता है, SD2 के लिए ही होता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, रुको, ट्रांसफर कर रहा हूँ लैपटॉप में। ठीक है, ट्रांसफर हो गया है, डाउनलोड्स। ये देखो, फ्लिपकार्ट में तो एक क्वेश्चन पूछा गया था यार। ठीक है, तुम फ्लिपकार्ट के और भी मशीन कोडिंग के क्वेश्चंस इंटरनेट से भी निकाल सकते हो, FYI। ठीक है, तो देखो ये था कि वी आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन ऐप दैट लेट्स पेशेंट कनेक्ट टू डॉक्टर, बुक अपॉइंटमेंट्स, डेज डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट ऑफ 60 मिनट्स ईच, 9 AM to 9 PM। दिस क्या क्या फीचर लिखने हैं। एक डॉक्टर शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ दिस, डॉक्टर शुड बी एबल टू डू दिस। फिर कुछ बोनस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर कुछ अदर नोट्स है, यू डू नॉट नीड टू यूज एनी डेटाबेस, नो SQL स्टोर और एनीथिंग। कोई UI नहीं बनाना है, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। डेमो चलना चाहिए तो उसके लिए एक ड्राइवर क्लास लिखनी होगी। प्लीज प्रायोरिटाइज कोड कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन। एक्सपेक्टेशन क्या है, वर्किंग डेमोन्स्ट्रेबल कोड हो, फंक्शनैलिटी सही से हो, और मॉड्यूलर एंड रीडेबल हो। यहाँ पे जब मॉड्यूलर रीडेबल बनाना है तो फिर तुम्हें अच्छे सॉलिड प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिस और अच्छे डिजाइन पैटर्न वगैरह लगाने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन है, मैं तुम्हें चैट में भी भेज देता हूँ इफ यू गाइज वांट। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, मेरे से डिफरेंट डिफरेंट पूछा हुआ है। तो इसका मेरे पास डॉक्यूमेंट ही पूरा पड़ा है, ऐसा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट शेयर हुआ था। ये पूरा डॉक्यूमेंट देखो, उसको पढ़ते रहो, इससे पूरा 1.5 घंटे में कोड करना था। देख रहा है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि एक LLD का अलग राउंड हो, मशीन कोडिंग का अलग। मशीन कोडिंग में ना एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, देखो ये ना, ये प्रोजेक्ट है ना, इसमें कोई तुमसे डिजाइन पैटर्न नहीं पूछ रहा, या कोई सिंपल सी क्लास का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, या जैसे आज हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक क्लास बनानी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। इसमें पूरा ऐप कोड करना है, मशीन कोडिंग में ना ऐप कोड करनी होती है।
हाँ विमल, तो वो अच्छा, तो मतलब मैंने फ्रंट एंड वाले बैच में एक पबसब आर्किटेक्चर पढ़ाया था, ऑब्जर्वर पैटर्न होता है वो मुझसे एटलासियन में पूछा गया था। ज्ञानेंद्र, फ्लिपकार्ट में ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए 1.5 घंटा था। इन 1.5 hours यू हैव टू कोड द होल प्रोजेक्ट, जिसमें ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये बोनस फीचर है। मैंने बोनस मतलब मैंने बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट सारी बनाई थी, बोनस फीचर लगा लो 75% बना दिए थे। इट विल टेक, हाँ तो 1.5 घंटे में बनाना है भाई मॉड्यूलर। भाई फिर इंटरव्यू की चीज का है फिर। मैं मेरे पास अपना सॉल्यूशन पड़ा भी है इनफैक्ट, मतलब मैं दिखा देता हूँ। रुको, फाइल, क्लोज प्रोजेक्ट, क्लोज प्रोजेक्ट। ओ मैंने डिलीट कर दिया यार शायद, शिट। डिलीट कर दिया क्या यार मैंने? अच्छा नहीं, एक सेकंड रुको, मैंने ना उनको मेल किया था। अच्छा, तो हमारे में क्या था, फ्लिपकार्ट में क्या था कि सॉल्यूशन बना के उनको मेल करना था। मैं तुम्हें दिखा दूंगा, अभी मेरे को फिर आईडी ना लैपटॉप में लॉगिन करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें दिखा दूंगा, पहले लैपटॉप में था, मैंने शायद अभी डाउनलोड्स फोल्डर क्लियर किया था तो उसमें हट गया वो। ठीक है, इस तरीके से रहता है। बट आर एबल टू गेट द पॉइंट, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है मशीन कोडिंग राउंड से? ठीक है, तो अब ये मैं तुम्हें बता दूं, ये जो बेसिक फीचर्स है ना, इनको बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ दो चीजें चाहिए, सॉलिड प्रिंसिपल्स और बेसिक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें कोई डिजाइन पैटर्न की जरूरत ही नहीं है, हार्डली, मतलब अगर फोर्सफुली लगाना है तो फैक्ट्री लग जाता है। जो बोनस रिक्वायरमेंट थी ना, ये वाली डिफाइंड डिफरेंट रैंकिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पे एक पैटर्न होता है स्ट्रेटजी पैटर्न, वो लग रहा था। तो तुम देखो मशीन कोडिंग है, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि डिजाइन पैटर्न पे ही डिपेंडेंट है। लैंग्वेज तो जेडी पे डिपेंड करता होगा यार, बैकएंड के लिए था। जनरली जब भी किसी बैकएंड की हायरिंग होती है, कोई लैंग्वेज डिपेंडेंसी नहीं होती। फ्रंट एंड में लैंग्वेज डिपेंडेंसी होती है कि जावास्क्रिप्ट में ही करना है। वुड यू रिकमेंड जावा और जेएस फॉर बैकएंड? अगर ऐसा कुछ बनाना है तो फिर तो जावा में बनाओगे ना, तो ज्यादा बेटर है। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आई बिलीव जावा में बनाओ तो ज्यादा बेटर है, या फिर टाइपस्क्रिप्ट से बनाओ तो थोड़ा ढंग से प्रिंसिपल्स लगा पाओगे। बट वैसे अगर बैकएंड पढ़ना है तो जावा स्क्रिप्ट, या अगर पढ़ने के परस्पेक्टिव से पूछ रहे हो तो नोड जेएस या जावा, दोनों के बैकएंड काफी ज्यादा यूज होते हैं, काफी स्केलेबल बैकएंड होते हैं, तुम दोनों में अपना करियर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कूल। सो गाइस, अभी हम लोगों ने अपने बिल्डर पैटर्न का ना अभी खाली एक लेवल देखा है, V0 देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कोड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कोड अब हमारा बच्चा है, V0 हमने देख लिया है बिल्डर का। पर अभी भी ना, अगर तुम मेन क्लास देखोगे तो बहुत अपीलिंग सा कोड नहीं लग रहा है। पहले बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, बहुत ना अपीलिंग सा कोड नहीं लग रहा है। इस कोड को ना थोड़ा अपीलिंग बनाएंगे। है ये भी बिल्डर पैटर्न, जो फाइनल सॉल्यूशन हम बनाएंगे वो भी बिल्डर पैटर्न होगा। Currently, this is also a builder pattern. The final solution that we will make will also be a builder pattern. It will be just more elegant. Make sense? ना ना, बिना फ्रेमवर्क के मिलिंद, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर एक्सपेक्टेड टू बी मेड विदाउट एनी फ्रेमवर्क ऑल टुगेदर। अच्छा रुको, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, रुको यार मैंने क्या बनाया था। लॉग इन करना पड़ेगा बस, और भी वही दर्द है। पता नहीं कैसे लॉग आउट हो जाता है मेरे लैपटॉप में। रुको मैं दिखाता हूँ, पासवर्ड भी याद है सॉरी बेबी में। रुको जरा भाई, पासवर्ड भी देखें कुछ याद है हमको या नहीं। अबे यार, हम्म,
ठीक है भाई, पासवर्ड तो याद है। नेट से क्या दिखाना है, मैं अपना खुद का दिखा देता हूँ। कोई मैं 100 बार बोला, मैं कोई दीदी भैया थोड़ी हूँ। मैं तो अपना खुद का ही दिखा दूंगा भाई। हम तो काम करके पढ़ा रहे हैं, छोड़ के थोड़ी पढ़ा रहे हैं। अपना दिखा देता हूँ, नेट से ही दिखाना है। इनविटेशन इनविटेशन, एक मेरे को फॉरवर्ड करना था। एक सेकेंड, इससे भी पहले वाले में होगा। कहाँ भेजा था यार? ड्राइव पे अपलोड किया होगा, रुको। हाँ, मिल गया। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मेरे पास तो अपना होगा ही। ये लो भाई, आ जाओ। ये भी दिखा देते हैं। डाउनलोड्स, फ्लिपकार्ट डॉट जिप, फाइल, क्लोज प्रोजेक्ट। ये लो भाई। मैं तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट कोड दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मना किया था किसी और से शेयर वैसे करने के लिए, क्योंकि शायद हायरिंग सीजन में यूज कर रहे होंगे। बट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ तो तुम देखोगे। तो एक पेशेंट की इंटरफेस बनाई हुई है, डॉक्टर का ऐसे इंटरफेस बनाया हुआ है, डॉक्टर के इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन ऐसे बनाई हुई है उसकी क्लास बनाने के लिए। जो स्ट्रैटेजी पैटर्न मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये देखो, स्ट्रैटेजी पैटर्न के लिए बनाया हुआ है, डॉक्टर लिस्टिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है। रैंक लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, इसमें लिस्ट डॉक्टर्स का मेथड है। ठीक है। इनम क्लासेस बनाई हुई है, देखो प्योर, पूरा प्योर जावा से लिखा हुआ है। ठीक है। अपॉइंटमेंट फैक्ट्री, यहाँ पे अपॉइंटमेंट क्रिएट करने का एल्गोरिदम था, ये एक फैक्ट्री पैटर्न लगा लो, मैंने इम्पोज ही कर दिया था। तुम नहीं भी फैक्ट्री करके लिखोगे तब भी तुम बना फैक्ट्री ही रहे हो। ठीक है। तो ये यहाँ पे सारा एल्गोरिदम डाला था अपॉइंटमेंट फैक्ट्री की। ये तुम्हारी इंटरफेस, ये तुम्हारी क्लास। इंटरफेसेस किस लिए? एब्स्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है। सेम चीज यूजर के लिए, देखो यूजर का एक इंटरफेस है। अब पेशेंट भी एक यूजर है, तो इंटरफेस पेशेंट यूजर को एक्सटेंड कर रहा है। और डॉक्टर कहाँ गया, डॉक्टर कहाँ गया, हीरा डॉक्टर, डॉक्टर भी एक यूजर है तो वो भी कर रहा है। तो देखो, इसमें रीयूजेबिलिटी बनाई इनहेरिटेंस का यूज करके, है ना। अब डॉक्टर और पेशेंट दोनों को सेम प्रॉपर्टीज यूज करनी है हमेशा, यूजर वाली। तो हमारे पास वो वाली प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। तीनों के पास नेम, आईडी और एड्रेस तो होगा ही होगा। ठीक है। तो देखो, ये पूरा प्लेन जावा से बन रहा है कोड। और फाइनली तुम्हें ऐसी एक ड्राइवर क्लास लिखनी थी या मेन क्लास लिखनी थी। इस ड्राइवर क्लास को जब तुम रन करोगे तो कंसोल पे सारा आउटपुट आएगा। कंसोल बेस्ड ऐप बनानी होती है। देखो, कंसोल पे आउटपुट आता है ऐसे। कोई तुम्हें सर्वर नहीं लिखना, कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं करना, नथिंग। बात समझ में आ रही है? समझ में आया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? 1.5 घंटे में फ्रेमवर्क से तो फिर यार, मतलब यार, फ्रेमवर्क इसलिए यूज करने के लिए नहीं कहते ना। मान लो अब तुम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो स्प्रिंग बूट, या फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो एक्सप्रेस, मैं यूज कर रहा हूँ रूबी ऑन रेल्स। 1.5 घंटे क्या, मैं तो 15 मिनट में बना दूंगा जो तुम 1.5 घंटे में नहीं बना पाओगे। तो फ्रेमवर्क्स में क्या होता है, कुछ फ्रेमवर्क्स के पास एज होता है यार, कि वो फ्रेमवर्क्स में थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। तो वो तो फिर प्रॉब्लमेटिक है ना। बट क्यों क्यों, मतलब प्योर लैंग्वेज में लिखना होगा, कोर लैंग्वेज में लिखना होगा, तो फ्रेमवर्क से फर्क नहीं है, क्योंकि फ्रेमवर्क यूज नहीं होना। तो तुम रूबी में लिखो, पाइथन में लिखो, बस थोड़ा सा बस सिंटैक्स किसी का फास्ट लिख लोगे, बट ओवरऑल कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यार साहिब, मैं तो कहूंगा कि इतना डिफरेंशिएट क्यों करना है, बैकएंड भी जावा में कर लो, डिजाइन सिस्टम डिजाइन तो पढ़ ही रहे हो जावा में, डीएसए भी जावा में कर लो। इतना माथामारी क्यों करना चाहते हो? खुद को इतना पेन क्यों दे रहे हो? सब जावा में कर लो। नहीं? यार मैं तुम्हें ना एक बात बता देता हूँ। मतलब जावास्क्रिप्ट से इतना ज्यादा, मतलब सब लोग जावास्क्रिप्ट से बैकएंड पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? या सब लोग जावास्क्रिप्ट से बैकएंड क्यों यूज करते हैं? दो रीजन है। तुम्हें देखिएगा मार्केट में सब लोग ना मर्ज स्टैक ही पढ़ाते हैं। ठीक है। अ, उसका एक रीजन है। मर्ज स्टैक ना पढ़ाना आसान होता है। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग तुम देखोगे, मैं बस ये तुम्हें बता सकता हूँ, मोस्टली लोग सेम सी चीज स्क्रड ऐप बनवा रहे होते हैं, और फिर उसको रिएक्ट के ऐप पे वो करा देते हैं, कंज्यूम करा देते हैं। ठीक है। तुम वैसे इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो इंडस्ट्री में बहुत ही ऐसी कम कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो नोड जेएस यूज करती हैं, बट बहुत ही ऐसी कम कंपनीज हैं जो सिर्फ नोड जेएस यूज करती हैं। दोनों में बहुत फर्क है।
बहुत सारी कंपनीज हैं जो नोड जेएस यूज करती हैं, बट बहुत कम कंपनीज हैं जो सिर्फ नोड जेएस यूज करती हैं। समझ रहे हो? स्टार्टअप्स होंगे हाँ जो प्योर नोड जेएस पे बने होंगे, जैसे मैं पहले कोडिंग लॉस में काम करता था, वहां का पूरा बैकएंड सब नोड जेएस में लिखा था, स्टार्टअप्स होंगे। बट एमएनसी ऐसी बहुत कम होंगी जो सिर्फ नोड जेएस पे डिपेंडेंट होंगी। बट एमएनसी ऐसी बहुत ज्यादा होंगी जो सिर्फ जावा पे डिपेंडेंट होंगी। जैसे लिंक्डइन में ना जावा के अलावा कुछ नहीं लिखते बैकएंड में, नथिंग। गूगल में नोड जेएस नहीं यूज होती, नोवेयर, कोई नोड जेएस यूज नहीं करता। बस समझ में आ रही है? बट स्टार्टअप्स में नोड जेएस दबा के यूज, जेप्टो में बहुत ज्यादा यूज होती है नोड जेएस। तो एमएनसी में ऐसा होता है कि यार नोड जेएस ना मतलब यूज होती है, बट उसके साथ कुछ और भी यूज हो रहा होता है। हाँ, तो जेएस में क्योंकि फुल स्टैक काम हो जाता है तो स्टार्टअप्स को सस्ते पड़ते हैं बंदे। बट कंपनीज में ऑलरेडी इतना सेग्रीगेशन होता है तो उनको इतना दिक्कत नहीं होती है। और इतने ज्यादा तुम्हें कोर्सेज इसलिए दिखते हैं क्योंकि पढ़ाना आसान है। मोस्टली तुम देखो जो दीदी भैया पढ़ा रहे हैं, मोस्टली में से एक आधे बंदे को छोड़ के कोई भी टाइप स्क्रिप्ट में तुम्हें कोई कोड नहीं कराता। इस बार भी मतलब जो मैंने अभी बैकएंड का 3.2 निकाला, उसमें मैंने एक चीज स्ट्रिक्ट रखी खुद के लिए भी और पूरी टीम के लिए, भाई अपन टाइप स्क्रिप्ट में कराएंगे कोड। ठीक है, मतलब हो गया जावास्क्रिप्ट का काफी, अब खुद को भी थोड़ा थ्रिल चाहिए। ठीक है, अभी मैं स्प्रिंग बूट का भी मतलब जो जावा वाले हैं उनके साथ तो चलेगा, स्प्रिंग बूट का एक डेडिकेटेड एक छोटा कोर्स भी निकालूंगा। क्योंकि मतलब आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई टीच एवरीथिंग दैट इज यूजेबल इन इंडस्ट्री। ठीक है, बस मंस्टैक इसलिए पढ़ा दूं क्योंकि मंस्टैक इजी है, डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, फ्रंट एंड में ऑलरेडी हम लोग टाइपस्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, मैंने सोचा बैक एंड में भी अब कर देना चाहिए, दिस इज माइट बी अ गुड टाइम। तो वो वाला सीन है, इसलिए मतलब तुम इतना लैंग्वेज में मत जाओ। ठीक है, ओमकार तुम कौन से बैच में हो? अच्छा, स्प्रिंग बूट लैम्डा। यार उतना इन डेप्थ वाला स्प्रिंग बूट ना अभी मतलब आएगा भी तो इस वाले लैम्डा के बाद ही आएगा, क्योंकि इसको पढ़ाने में तो टाइम लगेगा ना। समझ रहे हो? बट अगेन मैं थोड़े टाइम में जाके ना बैकएंड का वो सॉर्ट कर दूंगा कि लैंग्वेज डिपेंडेंसी ना रहे, वो कुछ सॉर्ट करूंगा मैं उसको। तो मशीन कोडिंग राउंड्स के लिए, अच्छा मैं तुम्हें एक और एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ इफ यू गाइस वांट। जैसे तुम ना लीड कोड पे जा सकते हो। ठीक है, यू गाइस कैन गो ऑन लीड कोड। जैसे फ्लिपकार्ट मशीन कोडिंग राउंड, लीड कोड ऐसे लिख सकते हो। तुम्हें बहुत सारे फ्लिपकार्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे सिमिलर, जैसे मेरे थे वैसे ही सिमिलर मिल जाएंगे तुम्हें। जैसे तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने तो सोचा था फ्लिपकार्ट की फ्रंट एंड वाली हायरिंग में भी पार्टिसिपेट कर लूँ, उसका भी एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि भाई वो लोग वो कहाँ कहाँ पूछ रहे हैं। तो फ्रंट एंड में उन्होंने बैठने नहीं दिया कि भाई तुम्हारे पास तो ऑफर है, तुम फ्रंट एंड में क्यों बैठ रहे हो, ये वो तो भगा दिया था मेरे को, वरना मैं फ्रंट एंड का भी निकाल लेता। बट देखो ये जैसे है ना, ये फूड कार्ट वाली ऐप बनानी है। देख रहे हो रिक्वायरमेंट, ये सब कोई यूआई नहीं बनाना, कोई नो एसक्यूएल स्टोर नहीं बनाना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिख रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मशीन कोडिंग के। तुम और भी देख सकते हो, जैसे amazon मशीन कोडिंग राउंड, लीड कोड। तो हर कंपनी के जाओ तुम्हें आइडिया लगेगा। SD1 में तो पूछते ही नहीं क्या। और कौन सी कंपनी पूछती है? ऊबर पूछती है क्या? ऊबर पूछती होगी। हट, ये भी नहीं है। वैसे तो मेरे को इतना भी पता है ढंग से तो, ये पेपैल पूछती है शायद, रुको पेपैल पूछती है क्या? कोडिंग राउंड, फिर अब खत्म कर भाई कोडिंग राउंड। नहीं, कम पूछती हैं कंपनीज जो, मतलब फ्लिपकार्ट सबसे तमीज से पूछती है राउंड, फ्लिपकार्ट के राउंड सबसे बढ़िया होता है, सबसे तमीज से पूछते हैं। नहीं यार, मैंने कभी उबर का नहीं दिया। मेरे को उबर का टेस्ट आया हुआ था, बट घर में शादी थी तो मिस हो गया मेरा, तो मैं दे नहीं पाया। और मतलब टेस्ट तब आया था जब मैं मतलब ऐसे एक्टिवली नहीं ढूंढ रहा था। जैसे मैंने वीजा का भी नहीं दिया, वीजा का भी मुझे टेस्ट अभी भी आया हुआ है। मैं तुम्हें दिखाऊं तो वीजा वालों ने पता नहीं टेस्ट वेस्ट भेजा हुआ है मुझे। अच्छा फिर से लॉग आउट है, so वो भी आईडी लॉग आउट है। कई कंपनीज को मैंने नहीं दिया, बट मैं ट्राई करता हूँ, देता रहता हूँ टू मेक श्योर कि अपन भी अपस्किल करते रहे। बट जो भी है ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में विल बी राइटिंग द एक्चुअल बिल्डर। ठीक है, अभी हमने V0 लिखा है, विल बी कन्वर्टिंग आवर V0 बिल्डर टू अ नाइसर बिल्डर पैटर्न and complete the builder pattern and start one more design pattern, discuss one more design pattern. Again, we'll be taking a problem and we'll try to solve the problem. We don't want to learn the design pattern just for the sake of it, just to rote learn it. We'll instead try to solve a problem altogether. That being said, let's wrap today's session here, guys. We are going to meet soon in the next set of sessions. Till then, take care. Bye bye. दिल्ली में कब मिल रहे हो आप? यार दिल्ली आ रहा हूँ मैं एक महीने के लिए। कुछ प्लान करता हूँ मैं, शायद कोई एक मीटअप सा प्लान तो करूंगा अराउंड 26 जनवरी के बाद।
क्योंकि 26 जनवरी से पहले बहुत सिक्योरिटी रहती है ना, तो काम के लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है। तो 26 जनवरी के बाद एक सोच रहा हूँ मैं एक मीटअप सा प्लान करूँ बिटवीन 26 to 29, या फिर शायद 26 जनवरी के पास भी कर लूँ। तो आई कम यार, महाराष्ट्र को कोई प्लान नहीं है क्योंकि आई लिव इन दिल्ली। तो महाराष्ट्र आऊंगा भी तो घूमने। आई माइट कम टू पुणे इन मार्च फॉर सम वर्क, शायद, नॉट श्योर। कोई, अगर किसी का कोई कॉलेज वाले जाए, इफ यू गाइज आर conducting any workshop or something in college, then if your college invites me, then probably I can come. हाँ, संडे वनडे ही रखेंगे यार ताकि सब लोग आ पाए। यार मैं तो वेस्ट दिल्ली, मेरी आवाज़ से पता नहीं लगता क्या मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ? अगर नहीं लगता तो शायद माइक में दिक्कत है। वेस्ट दिल्ली से भाई मैं। चला, ठीक है, बनाते हैं कुछ कुछ प्लान। ठीक है, बाकी स्टेट्स का तो प्लान नहीं है, बट अगेन एज मेंशन, अगर किसी कॉलेज में कुछ इवेंट है और समथिंग, देन मे बी इफ यू गाइस, इफ योर कॉलेज इनवाइट्स मी, आई कैन कम। ठीक है, बट आई विल बी इन पुणे probably in March. I'm going for a foreign trip in Feb, but nowhere else. दिल्ली रहूंगा, दिल्ली बैंगलोर, हार्डली शायद पुणे। तो yeah, cool. That being said, let's wrap today's session here, guys. We are going to meet soon in the next set of sessions. Till then, take care. Bye bye. Have a lovely week ahead and keep coding, guys.